Hello guys, I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video on basics of heights and distances. Here we will go through some basics of trigonometry and then to the actual concept of heights and distances. It will be very much helpful for your upcoming entrance exam. सो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता रहने चाहिए, जैसे कि लेट अस से दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा is adjacent upon hypotenuse, and then you have tan theta which is opposite upon adjacent, है ना, tan theta. So sin theta is opposite upon hypotenuse. In this case sin theta will be a upon c, है ना, opposite में a है, hypotenuse is c. cos theta is adjacent upon hypotenuse, so adjacent में b है and hypotenuse is c, so b upon c. And tan theta is opposite upon adjacent, so opposite में a है and adjacent में b है, adjacent में b है. So this is your basic trigonometric function. इतना ही trigonometry अपने को पढ़ना है. Here in our entrance exams you don't have to go through advanced level of trigonometry जो शायद हमने 11-12 स्टैंडर्ड में किया होगा, बट यहाँ पे हमको बेसिक लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इतने ट्रिग्नोमेट्री से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नीडेड फॉर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. अभी देर आर सर्टन ट्रायंगल्स दैट यू नीड टू नो. फर्स्ट इज 30-60-90 का ट्रायंगल. 30-60-90 का ट्रायंगल ये ऐसा रहेगा. सो दिस इज 30, this is 90, this is 60. Okay, opposite to 30 is 1, opposite to 90 is 2, opposite to 60 is root 3, opposite to 60 is root 3. इससे मुझे अगर निकालना है sin 30 डिग्रीज, cos 30 डिग्रीज and tan 30 डिग्रीज. How will I do that? Sin 30 degrees is opposite by hypotenuse 1/2. Cos 30 degrees will be adjacent by hypotenuse, that is root 3/2, and tan 30 degrees is opposite by adjacent, so that is 1/√3, that is 1/√3. ठीक है, ये एक हो गया. अगर मुझे बोल दिया किसी ने sin 60 डिग्रीज, cos 60 डिग्रीज and tan 60 डिग्रीज निकालो, how will you do that? 60 डिग्रीज है, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज रूट 3/2. cos 60 degrees will be adjacent upon hypotenuse. Adjacent is 1 in this case, hypotenuse is 2, so 1/2. And then tan 60 degrees is opposite upon adjacent, which is root 3/1. ठीक है, so this was your 30-60-90 का triangle. Moving forward to your 45-45-90 का ट्रायंगल. सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. सो 45 एंड 90 डिग्रीज. 45 के अपोजिट 1, ये 45 के अपोजिट 1, 90 के अपोजिट में रूट 2 ऐसा रहता है. देन अगेन सिंपल साइन 45 डिग्रीज, कॉस 45 डिग्रीज एंड tan 45 डिग्रीज ये निकालना है. सो साइन 45 डिग्रीज, cos 45 degrees and tan 45 degrees, ये आपको निकालना है. तो sin 45 degrees is 1, I mean opposite by hypotenuse, so that is 1/√2. cos 45 degrees is again adjacent by hypotenuse, that is again 1/√2. and tan 45 degrees is opposite by adjacent, opposite by adjacent is 1/1, opposite by adjacent is 1/1, and that is how you get this triangle.
है ना, यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है, तो दोनों जगह से sin 45 cos 45 tan 45 ही निकलेगा. देन लास्ट एंगल दैट यू हैव टू रिमेंबर इज 15 75 90 वाला. ठीक है, वेरी रेयरली यू गेट क्वेश्चंस ऑन दिस, बट अगर एक भी आ गया वही अपने से सॉल्व नहीं हुआ तो फॉर दैट पर्पज वी विल बी remembering this particular triangle as well. So this is 15 degrees, this is 90 degrees, this is 75 degrees. ध्यान से देखो, opposite to 15 degrees you will have root 6 minus root 2. Opposite to 75 degrees you will have root 6 plus root 2. And opposite to 90 degrees you will have 4. Opposite to 90 degrees you will have 4. जैसे ही आपके पास ये ट्रायंगल आ गया तो आप साइन कॉस टैन सब कुछ निकाल सकते हो. ठीक है, सो साइन 15 डिग्रीज विल बी अपोजिट विच इज रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 4. कॉस 15 degrees is adjacent upon hypotenuse which is root 6 plus root 2 divided by 4, and tan 45 degrees is opposite by adjacent which is root 6 minus root 2 by root 6 plus root 2. ठीक है, सेम यू कैन डू इट फॉर साइन 75 cos 75. तो साइन 75 डिग्रीज, cos 75 degrees and tan 75 degrees. So sin 75 degrees will be opposite upon hypotenuse root 6 plus root 2 by 4. Cos 75 degrees will be adjacent by hypotenuse, है ना. 75 के adjacent क्या है, root 6 minus root 2. So root 6 minus root 2 by 4, and tan 75 opposite by adjacent which is root 6 plus root 2 upon root 6 minus root 2. root 6 minus root 2. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, सो ओवरऑल इफ़ यू सी, ये सारे ट्रायंगल्स भी अगर आपको याद रहे तो ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो. इट इज साइन इज नथिंग बट अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, कॉस इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एंड टैन इज नथिंग बट अपोजिट बाय एडजेसेंट. ये ट्रायंगल्स की वैल्यूज़ भी अगर आपको याद रहेगी तो भी सफिशिएंट है. नेक्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, सो लेट अस से यू आर स्टैंडिंग हियर and there is a big tower over here. There is a big tower over here. So this angle, है ना, so you are looking from the ground to that angle or to the top of the tower. So whatever you are looking, whatever degrees you have raised your neck is your angle of elevation. So this theta is your angle of elevation. ठीक है, now this theta can be 30 degrees, this theta can be 45 degrees, this theta can be 15 degrees. It depends, it varies from question to question. Then let us say you are standing at the top of a tower. You are standing here, you are standing here, and there is a car over here. You are looking at this car at this angle. You are looking at this car at this angle. So whatever you make with the horizontal, this is your angle of depression. This is your angle of depression. This is your angle of depression. ठीक है, तो ऐसा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. अभी इसी से रिलेटेड वी विल सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस, यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इट. ठीक है, चलो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम पॉइंट P on a level ground, the angle of elevation of top of the tower is 30 degrees. If the tower is 100 meters high, the distance of point P from foot of the tower is how much? So this is our first question. From point P, the angle of elevation of top of the tower. From point P on level ground, the angle of elevation of top of the tower. So this is top of the tower, this is your tower. This angle of elevation is 30 degrees. If the tower is 100 meters high, if this tower is 100 meters high, the distance from point P to the
फुट ऑफ द टावर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? आई नो दैट ये मेरा 30 60 90 का ट्राइंगल बन गया. मैं साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं लगा रहा. आई नो दैट ये मेरा 30 60 90 का ट्राइंगल बन गया. 30 के अपोजिट 1 रहता है, 30 के एडजेसेंट में √3 रहता है, एंड 90 के अपोजिट में 2 रहता है. सो ये लेटर से P, दिस इज O एंड दिस इज O डैश. सो PO अपॉन O डैश है ना, PO अपॉन O डैश, दिस रेशो शुड बी √3/1 है ना. PO इज √3, O डैश इज 1, बट OO dash is nothing but 100 meters tower. So OO dash is nothing but 100 meters tower. So this PO will become how much? This PO will become 100 into √3, that is 100 √3 है ना. If the options are given है ना, √3 की value 173 point something like this can also be given है ना, or 100 √3. You need to understand the basic part over here. ठीक है. I could have solved this using tan theta as well. So we know that tan 30 degrees is 1/√3 है ना, and tan 30 degrees is also opposite by adjacent. So tan 30 degrees is also what? Opposite by adjacent. So opposite is 100. Opposite is 100 meters. Adjacent is PO dash, no, PO. So PO becomes how much? So PO becomes 100 √3. ठीक है. Whatever you are comfortable with, use that method and eventually you should get the answer. यही अपना मोटिव है. ठीक है. Let us try. This was our first question. Let us try to solve the second question. है ना. The angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degrees. And foot of the ladder is 4.6 meters away from the wall. ठीक है. Angle of elevation of the ladder leaning against a wall is 60 degrees. So this is your wall and this is your ground है ना. This will be, I mean, your walls and grounds are 90 degrees. We are expecting that. So this is the ladder. This is the ladder. Angle of elevation of this ladder is, where do we have that? This angle is 60 degrees. Okay. Angle of elevation leaning against the wall is 60 degrees. Foot of the ladder is 4.6 meters away from the wall. So this distance is 4.6 meters. And a foot of the ladder is 4.6 meters away from the wall. What is the length of the ladder? What is the length of the ladder? We can use it. We can use cos 60 degrees. Cos 60 degrees is nothing but cos 60 degrees is nothing but 1/2 है ना. You can use cos 60 degrees to be 1/2. Cos 60 degrees is also adjacent by hypotenuse. So adjacent is 4.6 and hypotenuse is your ladder L. Hypotenuse is your ladder L. L इधर जाएगा, 2 into 4.6. L is equal to 2 into 4.6, which is 9.2 meters. Which is 9.2 meters. Once this is done, this is one of the methods. दूसरा मेथड में तुमको हमेशा क्या कहता हूँ? 60 के अपोजिट √3, 60 के एडजेसेंट में 1, 6 and 90 के अपोजिट में 2. तो if 1 corresponds to 4.6, 2 will correspond to 9.2. 2 will correspond to 9.2. ठीक है. इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है. ठीक है. अगेन मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन. अ काइट इज फ्लाइंग विद द स्ट्रिंग टॉट इंक्लाइंड एट x टू द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. अ काइट इज फ्लाइंग विद अ स्ट्रिंग टॉट इंक्लाइंड. सो दिस इज योर काइट. This is your kite inclined at x with the horizontal. If the vertical height of the kite from the ground is 3 meters, vertical height of the kite from the ground is 3 meters and length of the string is 6 meters. Length of the string is 6 meters. We have to find x. So I know that sine x will be opposite
अपॉन हाइपोटेनियस. सो है ना, साइन क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस. सो व्हाट डू वी हैव? साइन एक्स opposite is 3, hypotenuse is 6, so that is 1 by 2. But sin x is 1 by 2. Sin 30 is also 1 by 2, na? Sin 30 degrees is also 1 by 2. You know that sin 30 degrees is also 1 by 2. So x must be equal to 30 degrees. And this x, we are comparing it with sin 30 degrees. So sine a function is common. X should be equal to 30 degrees. This is what we understand. Okay. So this is how you can solve questions on heights and distances. These are not the level of questions asked in the exam. This is just a basic session or a revision session. I hope you have liked it. Thank you so much.